Hi, good morning, students. In my previous lecture, we had finished IPC. We'd gone into absolute details. I hope all of you are now masters of IPC. We now go to the procedural part of the criminal justice system, which is now the CrPC. The Code of Criminal Procedure. The criminal justice system, we have two justice systems. We have infringement of a civil right. There, we want a relief. We want a redressal of the infringement of my civil right. For this purpose, we had the CPC, in which there is a right which is infringed, and now I want a redressal from the court. I started the proceedings with section 26, read with order 4, where I instituted a suit. The suit word became endemic to the civil justice system, to the beginning, to the start of the civil justice system. It culminated with a decree. The whole process of the civil justice system was covered by CPC. It was covered by 158 sections and 51 orders. In civil law, the substantive part is spread over many laws. What is my civil right? It's a very, very, very broad question. It can be ranging from torts to my infringement of civil rights by the state. It may be an infringement of my civil right by tax authorities. It may fall under company law. It may be a simple breach of contract. The gamut is too wide. That is the reason why the whole expanse of CPC is so wide. Civil rights are there in every moment. We have already discussed this whole aspect on my lectures on CPC. I need not dwell on that anymore because today we are going to the other part. All rights in the beginning were civil rights. There was no division into civil rights and criminal rights. Criminal law comes much later, somewhere around 8th or 9th century, where certain rights, if you infringe, are not only liable for getting relief, but also punishment. These infringements of rights affect not only the individual, but the public psyche. And this is the reason why these are infringements not merely of an individual's rights, but now they are an infringement of the collective right of the public. I'll call it the state. These infringement of rights are not mere infringements which are now can be given relief by a mere restitution. It is something much more. Here, the element of punishment comes in.
It is the end product of an infringement of a right which is now A, being quantified by the state, that you will not infringe anybody's right by an act or omission. And if you do so, you shall be punished. You shall be punished. My emphasis on the word is shall. In other words, the infringement of those rights which are now A, quantified by law, and B, are made punishable by law, are my rights which fall under the criminal justice system. The civil justice system started with an infringement of my civil right, which led to institution of a suit, which led to a trial after framing of issues, and which led to a judgment and finally a decree. In the decree, I got a relief. That relief could be a specific relief. That relief could be a money relief. It could be a possession. It could be a permanent injunction. Depends on case to case. Everything in civil law is what I will call ethereal. When I say ethereal, it is not cut and dried. But now we switch the page. We turn over the page and see the criminal justice system. When I switch the page and I come to the criminal justice system, everything is clearly laid down here. Which civil rights, if infringed, are punishable, are given now in black and white by the state itself. अब जो मेरे राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, कौन से राइट्स आप इन्फ्रिंज नहीं करोगे, ए सबसे पहले मुझे स्टेट ये बताएगी. बी, अगर आपने इन्फ्रिंज किया तो फिर उसकी सजा क्या है. सजा, पनिशमेंट. Such infringement of civil rights which are A, quantified by the state कि ये नहीं करना, ये infringement नहीं करना, और अगर करते हैं तो उसकी ये punishment, तो क्या एक्ट या ओमिशन नहीं करना, और अगर करते हो तो उसकी क्या पनिशमेंट है. इस इन्फ्रिंजमेंट को मैं एक शब्द वर्ड यूज करता हूं जो इस वर्ड सीआरपीसी में डिफाइंड है, और वो है ऑफेंस. सेक्शन 2 क्लॉज N ऑफ CRPC defines what is an offense. An act or omission given by the state and made punishable by the state. An act and omission which you don't have to do, which you are forbidden to do. So which acts or omissions are prohibited? First part. And if you still do it, what is going to be your punishment? ये एक दूसरे टाइप का इन्फ्रिंजमेंट आ गया जहां पे रिलीफ जो है वो एक पनिशमेंट के तौर पे मिलती है. जहां पे हमें कोई लॉ बताता है कि कौन सा एक्ट या ओमिशन आपने नहीं करना,
और अगर आप करते हो तो उसकी पनिशमेंट क्या है, जिसको अब मैं कहता हूं एक वर्ड में ऑफेंस। ये हमारा है सब्सटैंटिव पार्ट। ये इसको मैं कहूंगा सब्सटैंटिव पार्ट। सब्सटैंटिव पार्ट क्या होता है? क्लियरली लेड डाउन कि ये राइट्स इस इंसान के हैं जो आप इनफ्रिंज नहीं करोगे बाय एनी एक्ट और ओमिशन, और अगर आप करते हो तो फिर उसकी पनिशमेंट ये है। सब्सटैंटिव राइट मिलता है मुझे, वो राइट जो मेरा अपना एक राइट मुझे लॉ दे रहा है, मुझे स्टेट दे रही है। ये इन्फ्रिंजमेंट इतने खतरनाक है, अनलाइक इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ सिविल लॉ, कि ये इन्फ्रिंजमेंट मैं सिर्फ और सिर्फ विक्टिम का इन्फ्रिंजमेंट नहीं मान सकता। ये इन्फ्रिंजमेंट मैं पब्लिक के राइट का इन्फ्रिंजमेंट मानता हूं। अगर हम सब्सटैंटिव लॉ की बात करें, कौन से एक्ट्स नहीं करने और कौन से एक्ट्स अगर करते हैं तो पनिशेबल है बाय द स्टेट, ये सिर्फ हमारे पास आईपीसी से नहीं आता है। अगर हम सब्सटैंटिव क्रिमिनल ऑफेंसेस की बात करें तो इनका ओरिजिन हमें मिलता है मनुस्मृति में, जहां पे 12 हेड्स हैं लॉ के, जहां पे एक हेड पूरा क्रिमिनल लॉ पे है, और उसमें बताया गया है ये एक्ट या ओमिशन आपने नहीं करना, और अगर करते हैं तो ये उसकी पनिशमेंट है। अगर कहीं कोई राइट की पनिशमेंट नहीं है तो वो ऑफेंस नहीं है। दैट इज अ बेसिक एस्पेक्ट। सो ऑफेंस और पनिशमेंट का हैंड इन हैंड का रिश्ता है। हर ऑफेंस के अंदर उसकी पनिशमेंट दी जाती है। आईपीसी के अंदर हर ऑफेंस के बाद उसका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस लिखा गया है। हर ऑफेंस की अपनी एक क्लासिफिकेशन है। उस क्लासिफिकेशन में कौन सा मेरा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल है, उस कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा, और उसकी सजा क्या है। आईपीसी के अंदर जो पनिशमेंट्स हैं वो कोई थंब रूल नहीं है। उसका जो कि कौन सा एक्ट कौन सा ऑफेंस बेलेबल होगा, कौन सा ऑफेंस कहां जाएगा, इसका कोई थंब रूल नहीं है, जिसको हम कहते हैं ना बाटा रेट नहीं है। क्योंकि आईपीसी एक ऐसा यूनिक कोड है जिसका हर ऑफेंस मैकॉले ने वे किया हुआ है कि इसका असर पब्लिक पे क्या होगा। इसीलिए 7 साल की कोई पनिशमेंट है अगर, जैसा कि बिगेमी, वो नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है। एट द सेम टाइम हमने इतनी सारी ऑफेंसेस पढ़े जहां पे 2 साल की सजा है और नॉन बेलेबल है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस सिस्टम। इसीलिए जैसा कि मैंने बोला आईपीसी के अंदर हम कोई थंब रूल नहीं दे सकते हैं कि ओके जी अगर तो 7 साल से ऊपर की सजा है इस कोर्ट में जाएगा, बेलेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, नहीं। Every offense is taken on its own value, and every offense has been evaluated on its own demerits.
And what is the parameter of evaluation? How much does it affect the public psyche? More serious the offense, what is the definition of seriousness? How much does it affect the public? जितना ज्यादा सीरियस ऑफेंस, जितनी ज्यादा पब्लिक साइकी अपॉल होगी, जितनी ज्यादा पब्लिक साइकी इज शॉक्ड, अपॉल्ड, उतनी ही ज्यादा सजा। आईपीसी के सारे 511 सेक्शंस का क्लासिफिकेशन एक शेड्यूल में दिया गया है सीआरपीसी। सीआरपीसी का शेड्यूल 1 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पहला पार्ट उसका डील करता है सिर्फ आईपीसी से, दूसरा पार्ट डील करता है बाकी ऑफेंसेस से। वहां पे एक थंब रूल दिया गया है, वहां पे कौन से ऑफेंसेस बेलेबल होंगे, कौन से ऑफेंसेस सेशन कोर्ट ट्रायल में जाएंगे वगैरह वगैरह, वो एक थंब रूल से बनाया गया है। तो हम पनिशमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पनिशमेंट्स कौन सी होंगी वो हम पढ़ चुके हैं, आईपीसी में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया। राइट फ्रॉम डेथ पेनल्टी टू इम्प्रिजनमेंट, टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, टू forfeiture of property, टू फाइन, सब पढ़ लिया। वो तो है कि पनिशमेंट्स कौन सी हैं। अब पनिशमेंट्स कौन सी हैं काफी नहीं है। वेदर अ पनिशमेंट इज, उसके अंदर बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो कॉग्निजेबल है या नहीं, वी विल डील विद दीज वर्ड्स। अभी इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दीज टर्म्स। कौन सा कोर्ट में जाएगा, ये सब चीजें हमें शेड्यूल 1 सीआरपीसी बताता है। शेड्यूल 1 as I told you has been divided into 2 parts, एक सारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस इन आईपीसी एंड दूसरा ऑल अदर ऑफेंसेस। ऑफेंसेस की अगर मैं बात करूं, 3 टाइप के ऑफेंसेस होते हैं। एक जो पूरा हम कहेंगे हाथी का पैर है, वो आईपीसी है, दैट इज द इंडियन पीनल कोड। But we have offenses which are based on special matters called special laws. So special laws के offenses will deal with one matter only. For example, Arms Act. For example, Protection of Civil Rights Act. ऐसे हजारों एक्ट हैं, छोटे छोटे, जिनको हम माइनर एक्ट्स भी कहते हैं। या फिर एक और तरह के हमारे पास ऑफेंसेस हैं जो एरिया वाइज हैं, जिनको हम लोकल ऑफेंसेस कहते हैं, जो सिर्फ उन्हीं एरियाज में ऑफेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल मोकोका, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट जो है, वो सिर्फ महाराष्ट्र में लागू होता है। आईपीसी का पूरा 511 सेक्शंस का क्लासिफिकेशन हमारे शेड्यूल 1 के पहले पार्ट में आ गया, और अब बाकी सारे ऑफेंसेस जो स्पेशल और लोकल लॉज में आएंगे वो शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में आ गया। जैसा कि मैंने बोला, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ऐसा राइट होता है बाय एन एक्ट और ओमिशन विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। अब उसको पनिश करना है, उसकी पनिशमेंट भी ऑलरेडी लेड डाउन है, निर्धारित है। अब एक, जैसा कि हमने देखा, प्लेंटिव ने बोला तो हम ये थोड़ा सीधा कहेंगे कि डिफेंडेंट पैसे दो, रिलीफ दो। सिमिलरली विक्टिम ने कहा कि मेरे साथ ये ऑफेंस हुआ है, तो हम सीधा थोड़ा एक्यूज को फांसी पे टांग देंगे।
we have to now give him a chance to negate whatever the victim is saying. उसका एक पूरा प्रोसीजर है. It's a detailed procedure. This procedure is called the criminal procedure. What is a criminal procedure? Right from the infringement of a right, when I come to the appropriate authority, कि सर मेरी फरियाद सुन लो, उसके ऊपर अब पहले एक इन्वेस्टिगेशन करेगी. अगर पुलिस के पास आता है वो एफआईआर में, और अगर वो सीधा कोर्ट में जाता है तो फिर कोर्ट एक इंक्वायरी करेगी. उसके बेस पे now the trial will start. I'll come to that little later. प्रोसीजर रातों रात नहीं आ गया. प्रोसीजर आने में बहुत टाइम लगता है. It is a slow evaluation of the needs of the times. It's an evolution of a complete system. अगर हम बिल्कुल जेनेसिस पे जाएं इंडिया में, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो प्रोसीजरल पार्ट है, अगर मैं कहूं कि मनुस्मृति में सब्सटैंटिव पार्ट ज्यादा आता है, प्रोसीजरल पार्ट हल्का सा है, बहुत ही हल्का सा. बट प्रोसीजरल पार्ट हमारा डिटेल्ड में आता है याज्ञवल्क्य स्मृति में, और बाद में तो फिर नारद स्मृति में. याज्ञवल्क्य स्मृति एंड नारद स्मृति deal in detail with the procedural parts. मुस्लिम टाइम्स पे जब आते हैं तो ये तो हिंदू लॉ का था. हिंदू टाइम्स में राजन जो था वो याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति और जैसे स्मृतिज में थोड़े थोड़े एक्सर्प्ट्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, उनको फॉलो करते थे. The ideals were laid down, the ideals of the procedure which a trial will follow, that the law of evidence, all was laid down, I will say, in fair detail. Muslim law, Muslim times में जब हम आते हैं, the king was the fountainhead of justice. He was an image of God. And that is why the procedure which was followed as per Shariat. Whether it is the slave dynasty or it is the Mughals, we find that the Muslim law emanates from the Holy Quran. Islam basically is based on justice, so there was not much problem in the procedure. So we find both in Hindu times as well as in the Muslim times, there was adequate procedure both of substantive laws and of the procedures. Now we come to the third part, which is the British times. The British, who came to India because of the 1600 charter to the East India Company, was basically a trading company. It is only after the Battle of Plassey, 1757, that now the British start administrating. The Regulating Act 1773 comes into force. That is the first act of India. The British first made their strongholds in 3 presidencies: Calcutta, Bombay and Madras.
These were called the presidency towns. These towns were guided by common law. Hence, there were separate procedures which were followed in presidency towns, and the other places who called the provinces, which were basically princely states, were given a procedure, but then they had a different procedure. First, we started with 3 separate procedures for Bombay, Madras, and Calcutta. However, then we had the first step towards consolidation of procedure by what we call the Criminal Procedure Supreme Courts Act 1852. उस टाइम पे प्लीज रिमेंबर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसने सुप्रीम कोर्ट बनाए थे. So that is why we had the Criminal Procedure Supreme Courts Act 1852. 1861 में the High Courts Act was passed. And in 1862, the High Courts of Calcutta, Bombay and Madras were now created by Queen Victoria's charter, and they were given letters patent. अब क्योंकि Supreme Court was replaced by High Courts, that is why the Criminal Procedure Supreme Courts Act 1852 had now to be changed. And now it becomes High Court Criminal Procedures Act 1865. Because Supreme Court तो रहा ही नहीं, खत्म हो गया था. 1861 के Act से Supreme Court was abolished and now we have High Courts. So that is why the Criminal Procedure Supreme Courts Act 1852 is now replaced by, क्योंकि अब Supreme Court नहीं है, अब High Courts आ चुके हैं, by the High Courts Criminal Procedure Act 1865. ये तो हो गया लॉ प्रोविंसेस का, सॉरी प्रेसिडेंसीज का. इन प्रोविंसेस बिकॉज डिफरेंट एस्पेक्ट से तो डिफरेंट प्रोसीजरल लॉज एग्जिस्टेड. खिचड़ी थी, कोई प्रोविंस में कैसा प्रोसीजर है, कोई प्रोविंस में कैसा प्रोसीजर है. द ब्रिटिश मेड द फर्स्ट homogeneous law regarding the provinces by the General CrPC 1861 for provinces. तो अब क्या हो गया कि 1861 में एक जनरल CrPC आ गई पूरे प्रोविंसेस के लिए, और प्रेसिडेंसीज के लिए हमारा हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1865. तो कायदे से अब 2 CrPCs चल रही थी, एक प्रोविंसेस की और एक हमारी प्रेसिडेंसीज की. नाउ प्लीज रिमेंबर, ये सारे लॉज क्यों शुरू होते हैं? क्योंकि 1857 जो है 1857 को जो हमारा फर्स्ट सो कॉल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, उसके बाद जब हार जाते हैं सारी फोर्सेस इंडिया के, जब वेदर इट इज रानी ऑफ झांसी, टांटिया टोपे और बहादुर शाह जफर इज नाउ dethroned and now sent to exile, and after the 1858 accession to the crown, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, अब ब्रिटिश फ्री थे, अब वो कोई भी लॉ बना सकते थे. और इसीलिए 1858 के बाद हम जैसे कहते हैं झड़ी लग जाती है ब्रिटिश लॉज की. ये जो 1861 का लॉ बनाया गया था, जनरल CPC फॉर प्रोविंसेस, ये एक थोड़ा हैपहैजर्ड था. इसको थोड़ा ठीक करके एक अमेंडमेंट की जाती है और रिप्लेस बाय एक्ट 10 आता है 1872 का. तो कायदे से अब 2 तरह के हमारे पास प्रोसीजर्स चल रहे हैं, एक प्रेसिडेंसीज में जो हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1865 से गवर्नड है, और एक प्रोविंसेस में जो एक जनरल CrPC फॉर प्रोविंसेस है जो 1861 में अब लागू होती है, बट उसमें अमेंडमेंट्स कर करके अब थोड़ी बेटर बनाई जाती है, मोर ऑर्गेनाइज बनाई जाती है 1872 में, 1872 में. बट अभी भी क्या था कि 2 CrPCs चल रही थी, प्रोविंसेस की अलग
और प्रेसिडेंसीज की अलग। पहली बार अब 1882 में एक यूनिफॉर्म पैन इंडिया एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर बनता है क्रिमिनल लॉ का, जो दोनों प्रेसिडेंसीज को और प्रोविंसेस को कवर करता है। तो द फर्स्ट यूनिफॉर्म कोड आई विल नाउ से, पहले एक्ट्स थे, प्रेसिडेंसीज का एक्ट अलग और प्रोविंसेस का एक्ट अलग। अब हमारे पास एक यूनिफॉर्म कोड आता है, पहला CRPC आता है, विच इज नाउ 1882 की CRPC। तो फर्स्ट यूनिफॉर्म कोड ऑफ CRPC comes in 1882। However, क्योंकि ये पहला एक नेचुरली इट वाज द फर्स्ट क्रिमिनल प्रोसीजर जो पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में एक जैसा कोड आ गया था, फर्स्ट यूनिफॉर्म प्रोसीजर। नेचुरली इसमें बहुत सारी गलतियां थी, बहुत सारी चीजें मिसिंग थी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई एक कॉम्प्रिहेंसिव, इसको खूब ठीक किया इन्होंने। द ब्रिटिश वर वेरी गुड इन मेकिंग लॉज एंड अमेंडिंग लॉज, एंड नाउ वी हैव व्हाट वी कॉल अ कॉम्प्रिहेंसिव कट एंड ड्राइड CRPC ऑफ 1898। 1898 की जो CRPC है, ये हमारे ऑलमोस्ट 1973, कितने साल, ऑलमोस्ट 75 साल यही CRPC चली, इवन इंडिपेंडेंस के बाद। एक छोटा सा उसमें माइनर छोटे छोटे अमेंडमेंट्स आए, जैसा कि 1923 में कोई अमेंडमेंट आया था, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट, वी आर मोर बॉदर्ड अबाउट द 1973 कोड। हमारा जो मेन ग्रंथ था वो था 1898 की CRPC। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें दिखी वो थी कि जो 1898 का क्रिमिनल कोड था, CRPC थी, वो उसके अंदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स मर्ज थी। उसका कारण क्या था कि जो गोरों का कलेक्टर होता था वो कई जुडिशियल फंक्शंस भी करता था और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी करता था। ब्रिटिश हैड बोथ द पावर्स, वो एग्जीक्यूटिव पावर, सेम आदमी एग्जीक्यूटिव पावर्स भी एक्सरसाइज करता था और साथ साथ क्रिमिनल पावर्स भी यूज करता था, यानी कि जुडिशियल पावर भी यूज करता था। ये दिस collection, this unison of both the powers, executive and judicial, in one person, was basically the negation of Article 50 of our Constitution. Article 50 of our Constitution is very clear that there shall be a complete division of powers between the executive and the judiciary. दूसरा ये था कि जो CRPC 1898 की थी वो ब्रिटिश के एंगल से लिखी गई। हमारा जो आजाद देश था वो सोशलिस्ट था, वेलफेयर स्टेट था, गरीब लोग थे। हमें उन लोगों के राइट्स को ध्यान में रख के लिखनी थी। तो देयर वर बेसिक इनहेरेंट डिफेक्ट्स इन द 1898 CRPC। पहला इनहेरेंट डिफेक्ट था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थी। क्यों खिलाफ थी? It combined both the executive and judicial functions in the same person, which was against the dictates of Article 50 Directive Principles. दूसरा ये था कि क्योंकि ये ब्रिटिश एंगल से लिखी गई थी तो कहीं ना कहीं नेचुरल जस्टिस पूरा फॉलो नहीं हो रहा था। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि ये सोशलिस्ट तो बिल्कुल नहीं। अगर कोई गरीब काश्तकार मींस एग्रीकल्चरिस्ट, अगर उसका कोई राइट इन्फ्रिंज हो गया, जमींदार ने अगर कर लिया, तो हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं थे। गरीबों के एंगल से कभी भी ब्रिटिश लॉ नहीं लिखा गया।
उनका एंगल हमेशा होता था कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे, हम अपना रेंट लेते रहे, लगान लेते रहे, जमींदारी सिस्टम चलती रहे, सब कुछ हंकी डोरी रहे. दैट इज द रीजन व्हाई आते ही इमीडिएटली देयर वाज एन immediate need to overhaul the existing CRPC. There was a amendment which came up in 1955, but that was basically to speed up the trials. It was a very small amendment, not worth notice also. However, the Law Commission was now given the onerous task of completely rewriting the CRPC with the view of the ideals laid down by our Constitution. No doubt, the skeleton of 1898 was wonderful, but the spirit was not as per our Constitution. The body looked good, but the spirit was not. And this is the reason why the Law Commission was given this onerous task of going through each provision, overhauling each provision, and rewriting each provision with a view of the common Indian citizen, with a view that the Constitution should not be infringed, with a view that the poor man should get justice, and he should not be bereft of justice just because he happens to be indigent. The 41st Law Commission report comes in 1969, followed by another very important report, which is the 154th Law Commission report, which now comes in 1973. These form the precursors of our existing CRPC. On the basis of these reports, and more importantly, the 154th Law Commission report 1973, this criminal code which we have here is born. This criminal code has 484 sections, 2 schedules, and 56 forms. It is divided in 37 chapters, and it covers the whole gamut of things which should be covered in a criminal justice system's procedure. CRPC, if we go to our Constitution, to the 7th schedule, is in list 3. List 3 deals with the concurrent list of subjects where the state and the union can concurrently make laws. Entry 2 of list 3 says that criminal procedure including all matters included in CRPC. In other words, both the state and the center and the union can frame laws on CRPC. Now, in case there is a conflict between state laws and union law. Suppose कोई CRPC का कोई हमारा प्रोविजन है और स्टेट उस प्रोविजन के खिलाफ, उसके कॉन्फ्लिक्ट में कोई अपना लॉ बनाती है, क्या वो हो सकता है? Can it be allowed? For example, let's take an example. Section 438 deals with anticipatory bails. For a very, very, very long time, anticipatory 438 was omitted by UP, Uttar Pradesh.
the question arises, can a state make laws in CrPC which are in conflict with the laws of the union? Can the state refer to the 7th schedule list 3, especially to entry 2, which deals with CrPC, and make laws on the pretext that we have an equal power? For this purpose, I must refer to Article 354, Clause 2 of our Constitution. Article 254, Clause 2 makes it very clear that in case the state makes any law which is repugnant to the union law, though it is empowered by the list 3 of 7th schedule to make laws, no doubt about that, yet if the provision is repugnant to an already existing union law, then the matter can be reserved for the consideration of the president by the governor. That means the governor will reserve that bill for the assent of the president, and only if the president gives assent, तभी सिर्फ वो law बनेगा. So आज के दिन में अगर कोई स्टेट ने CrPC के किसी एस्पेक्ट के खिलाफ लॉ बनाना है, कोई यूनियन लॉ जो भी हमारी CrPC है उसके खिलाफ, उसके रिपग्नेंट कोई लॉ बनाना है, तो वो बिल जो एक नया लॉ बना रहा है यहाँ पे CrPC में जो स्टेट अपना लॉ बना रहा है, अगर वो रिपग्नेंट है टू द एग्जिस्टिंग यूनियन लॉ, तो फिर आर्टिकल 254 का क्लॉज 2 कहता है कि उस स्टेट का गवर्नर उस जो प्रपोज बिल है CrPC का, उसको अब रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए. अब अगर प्रेसिडेंट ने असेंट ना दी तो फिर लॉ नहीं बनेगा. Just keep it at the back of your mind. These are important aspects. Now that we are clear on these aspects, जैसा कि मैंने बोला 1973 में, based on the basic recommendations of the 41st Law Commission report as well as the 154th Law Commission report, we have this present code of 1973. This code came into being on, if you notice, please go to the top page, it comes into effect on 1st April 1974. तो 1 अप्रैल 1974 में ये हमारा CrPC comes into existence. Now इसके ऊपर if we notice, the date given is 25th January 1974. 25th January 1974 इस डेट को लिखा है, बट अगर आप आते हैं सेक्शन 1 में, it shall come into force on 1st day of April 1974. ये prelims का question है, please don't go wrong on this. No doubt the notification came back on 25th January 1974, but then section 1 clause 3 makes it very clear that it will come into effect on 1st April 1974. What should be the guiding principle of any procedural law? And what is the guiding principle of present CrPC? Any procedure of a justice system, whether it is the civil justice system or the criminal justice system, has 3 cardinal principles which must be followed. If any of these 3 cardinal principles are flouted, infringed, then that procedural law suffers from an inherent defect. An inherent defect
which in fact goes against the ethos of our constitution. What are these three guiding lights, these three guiding philosophies which should govern any procedural law of any justice system? Firstly, the procedure must ensure a fair trial. A fair trial. A fair trial has the basic ingredient of natural justice. A fair trial is the backbone of any healthy procedure. A fair trial is based on human rights. In fact, the Honorable Supreme Court has in many judgments clarified that fair trial is a right to life, Article 21. A fair trial, as I said, is based on natural justice. No person should be condemned without being heard. I must give complete access to the procedure to both the parties. It is not only that the accused should be given the access. I'm using the word both the parties. We must say that CrPC has ensured at every step that both the parties have an adequate representation throughout the court. An accused in criminal law jurisprudence starts with the presumption of innocence. This presumption of innocence came from a landmark judgment. No doubt it was there throughout, but then it came under as a judicial pronouncement in Woolmington versus Public Prosecutor, 1935, in which it was very clearly said that the burden of proving the accused guilty is always on the prosecution, and the burden never shifts. Because we recognize that an accused is presumed to be innocent unless proved guilty beyond reasonable doubt. We must keep this robust principle while writing CrPC, while framing the provisions of CrPC, and CrPC actually does that. It gives complete access to justice to the accused. An accused, हम accused को तंग नहीं करते हैं. अगर कोई कंप्लेंट दर्ज होती है डायरेक्टली कोर्ट में, तो पहले कोर्ट इंक्वायरी करेगा और अगर उसको लगता है कोई दम है तब बुलाएगा 204 में. बेल प्रोविजंस है. जो बेलेबल ऑफेंसेस है उनमें बेल एज अ राइट है. जो नॉन बेलेबल है वहां मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा या जज डिसाइड करेगा कि इसको देना है कि नहीं देना. एक बार प्रोसिक्यूशन के सारे एविडेंसेस कंप्लीट हो गए तो फिर कोर्ट डायरेक्टली बात करेगा एक्यूज के साथ 313 CrPC. पूरा मौका देगा उसको अपनी डिफेंस दे, और इसलिए वो अंडर ओथ नहीं मांगेगा. इवन अगर एक्यूज झूठ बोलना चाहे तो बोल सकता है, क्योंकि अंडर ओथ नहीं है वो. हर स्टेप पे CrPC कहता है कि हर रोज एक्यूज प्रेजेंट होगा, ताकि कल को एक भी चीज ऐसी ना हो जो उसको पता ना हो. ट्रायल शुरू होने से पहले सारे कागजात कोर्ट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, सेक्शन 207 में. हर स्टेप पे एक्यूज को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि उसका कोई राइट इसलिए इन्फ्रिंज ना हो जाए कि उसकी सुनवाई नहीं हुई. See, a fair trial is based on the robust principle of natural justice.
अगर तो नहीं हुआ तो कभी भी फेयर ट्रायल नहीं होगा. As I said, no person should be condemned without being heard. ये बेसिक वर्ड है. सो जो पहला कार्डिनल फिलॉसफी है, जो रोबस्ट फिलॉसफी है किसी भी प्रोसीजरल लॉ की, which must be followed, was that there must be a fair trial and it must conform to the principles of natural justice. Now I come to the second cardinal philosophy which should govern a good procedure. Any civil justice system or criminal justice system must adhere to this second principle also. And this second principle is there should be no delay. When I say there should be no delay, the basic jurisprudence principle, justice delayed is justice denied. A delay is always detrimental to both the parties. The victim keeps on awaiting justice, and the accused always has the sword of Damocles hanging over his head. Any good procedure will ensure that there is no delay. We saw in CPC, in Order 18, there was very clear that there should be, in fact, we saw so many provisions in CPC in the amendments given by 1999 and 2002 कि सारे amendment इसी चीज के लिए cover कर रहे हैं that there should be no delay. Similarly in CrPC, हमारा we find that in investigation, it is ensured that there is minimum delay. Similarly in trial, Section 309 makes it very clear that there shall be a day-to-day trial. And that is the reason why we find that delay has been minimized in the 1973 code. As far as delay is concerned, a delay in a trial is violative of Article 21, my right to life. We have the Honorable Supreme Court. I would like to quote these lines from my all-time favorite, Justice V.R. Krishna Iyer. In Nimyon Sangma, Nimeon, Nimyon Sangma versus Home Secretary, Government of Meghalaya, 1980 Supreme Court, Honorable Justice Krishna Iyer observed, and I quote, I would like to quote him: criminal justice breaks down at a point when expeditious trial is not attempted, while the affected parties are languishing in jail. We do not approve of this course and breach of the rule of law and express our strong displeasure at this chaotic state of affairs, verging on wholesale breach of human rights guaranteed under the Constitution, especially under Article 21. A delayed trial is nothing less than infringement of my fundamental right to life. This second cardinal philosophy is also covered by the present Code 1973. The third cardinal philosophy which should govern a good procedural law, which should govern a justice system, is that it should be socialist. What do I mean by this? You know, the British laws were made with the rich in their vision. The poor were never the mainstay of British laws. We did not have any system of legal aid or anything which could favor an indigent person to come forth for a redressal of his infringement of rights.
Modern Indian laws, after the framing of our constitution, must not forget the basic word, the ethos, that the constitution envisages a welfare state. That the constitution uses the word socialist right in the preamble. A poor man has equal right to a justice system as any rich man. The right to equality is the bedrock of our constitution. And that's the reason why a fair deal must be given to poor people also. CrPC ensures that a fair deal is given to all indigent persons. And this is why we see that the victim does not have to pay a single penny. अगर वो FIR दर्ज कराता है तो he even gets a copy of the FIR free, as is envisaged in section 154. इन्वेस्टिगेशन उसके बिहाफ पे पुलिस करती है फ्री, उसका ट्रायल पीपी लड़ता है फ्री. दिस इज इन स्टार्क कंट्रास्ट टू CPC, जहां प्लेंटिफ हर स्टेप पे खुद पैसा खर्च करता है. यहां तक कि जब समन भेजता है डिफेंडेंट को, अगर वो टाइम पे पैसे जमा नहीं कराता है तो हम ऑर्डर 9 में देख चुके हैं, उसका सूट डिसमिस हो जाता है, उसकी प्लेन डिसमिस हो जाती है. We have specific provisions of legal aid and it is ensured in CrPC कि कोई भी गरीब आदमी, क्योंकि वो गरीब है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से वंचित ना रह जाए. Our constitution must be reflected, it must be protected by all laws which are post-constitution. The spirit of our constitution must always be reflected blatantly and impliedly in every law. Article 20 clause 2 deals with double jeopardy. No person can be made to suffer double jeopardy. The statutory recognition to Article 20 clause 2 double jeopardy is seen in CrPC. There's a specific section which gives a statutory acceptance to this, which is section 300. Also, we have a right not to self-incriminate myself. This is reflected in CrPC, also hand in hand with the Indian Evidence Act. Section 24 of Evidence Act clearly tells us that there can be no confession made under inducement, threat or promise. No confession before a police officer is admissible under section 25. No confession made in police custody is admissible under section 26 Evidence Act. Both Indian Evidence Act and CrPC go in hand at one point of time when the trial starts, and both ensure that they protect the lofty ideals given in our constitution. What is the biggest achievement of the new CrPC? How is 1973 code a huge change over the existing 1898 CrPC? What is the basic inherent difference? How is the 1898 code different from 1973 code? 1898 code, we may have retained the skeleton, but the spirit is totally gone. The spirit of 1898 code was a servile India.
एक ऐसा इंडिया जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था. It was a fettered India. The 1973 code reflects the ideals of our constitution. The most important ideal was laid down in Article 50. There must be a complete separation of executive and the judicial. In the 1898 code, Britishers always were at the helm of important posts. सारी important posts Britishers के पास होती थी. And that is the reason why the executive and judiciary was rolled into one. जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का काम करता था वही एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का काम भी करता था. It was blatantly against the directive principle as laid down in Article 50. अगर एग्जीक्यूटिव ही जुडिशरी बनेगा तो बाढ़ ही खेत को खाएगी. The biggest achievement of this code, new code, is it completely segregates in two watertight compartments the powers of an executive magistrate and a judicial magistrate. Right from Section 6 CrPC, which lays down the courts, the classification of courts. Besides the High Court, the Session Court, JM1, JM2, there shall be executive magistrates, criminal courts. Executive magistrate criminal courts have been segregated as criminal courts right from Section 6. Section 3 makes it very clear. Of CrPC, of course, I'm talking about CrPC. Section 3 makes it very clear that any reference to the word magistrate in CrPC will mean reference to a judicial magistrate and nobody else. The powers of an executive magistrate in CrPC are purely preventive or preemptive in nature. They do not come into vogue once an offense has been committed. एक बार offense हो गया तो फिर executive magistrate का कोई रोल नहीं है. Offense होने से पहले का रोल है. Executive magistrates के अगर हम powers देखें, वो FIR शुरू होने से एकदम पहले के सारे पावर्स एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के. 107 to 124 प्रिवेंटिव पावर्स. ऑफेंस बचाना है हम. क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का बेसिक काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना. लॉ ऑर्डर मेंटेन कब होगा? जब हम ऑफेंसेस को प्रिवेंट करेंगे. वो पावर हम उसको दे रहे हैं सेक्शन 107 से लेकर 124 तक. लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि उसका बेसिक बेबी है. द मेन वर्क ऑफ अ executive magistrate is to maintain law and order. And that is why to maintain law and order we have provisions from 129 to 132 read with section 144. Public nuisances हैं. You don't expect a judicial magistrate to now look after public nuisances. Hence, public nuisances job has been given to the executive magistrate from sections 133 to 143. And finally, अगर कोई झगड़ा हो रहा है immovable property पे, तो वो हम उसको पावर दे रहे हैं 145 से लेकर 153. ये सारी पावर्स क्या हैं? प्रिवेंटिव पावर्स, लॉ एंड ऑर्डर के पावर्स, पब्लिक न्यूसेंसेस को हटाने के पावर्स. ऑफेंस होते ही क्या होता है? FIR दर्ज होती है या फिर कंप्लेंट दर्ज होती है. इन दोनों में फर्क क्या है हम अगले लेक्चर में डिटेल में करेंगे. बट प्लीज रिमेंबर, जैसे ही ऑफेंस हो गया ये वाला कंपार्टमेंट बंद, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कंपार्टमेंट, जुडिशियल जजेस का कंपार्टमेंट शुरू. After 153, the executive magistrate has minuscule role. छोटा छोटा रोल है. एक 167 में छोटा सा रेफरेंस आता है, उसका थोड़ा सा उसका पार्ट आता है, या फिर 174 में इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स में उसका काम आता है. नहीं तो कहीं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का कोई काम नहीं है. एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का कोर्ट नो डाउट क्रिमिनल कोर्ट है. वो क्यों है वो हम देखेंगे आगे जाके. बट देन
जो उसकी पावर्स हैं वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की नहीं है, और जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की है उसका इनसे कोई लेना देना नहीं। This was just an introductory lecture on CRPC नई है क्या. I wish I had more time so that we could complete the whole thing. Tomorrow I'm going to discuss a complete overview of CRPC. Right कि मेरा जब एक मेरे साथ ऑफेंस हुआ, मेरे साथ ऐसा एक्ट और ओमिशन हुआ जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ था, और उस एक्ट या ओमिशन को अगर कोई करता है तो उसका अंजाम सिर्फ सजा है. So if an offense is committed against me, then I need a redressal, and the redressal in criminal law is only punishment. I start the criminal justice system by lodging an FIR or lodging a complaint straight in the court. Lodging an FIR under 154 or lodging a complaint under section 200. एक पूरा लॉ है. I'll give a complete bird's eye view right from the beginning of the criminal justice system with the lodging of an FIR or a complaint, and right till the last part of CRPC. I'll take it up tomorrow in my lecture. Will be a complete overview of CRPC, कि CRPC चलती कैसे और उसका पूरा निचोड़ क्या है. I'll take it up in tomorrow's lecture. Thank you. God bless.